while heading towards my final exam, so I had an accident, or I cannot move even a single inch. We were visiting Pakistan for the first time, and he had a heart failure. It was very uncertain. After some certain time, मैंने देखा कि लोगों के रवैये कैसे बदलते हैं. एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी कल्चरली फिट. अडेप्टेबिलिटी कितनी है. जैसे फ्रेश ग्रेड्स होते हैं तो हम उस केस में ये नहीं कह सकते बिकॉज दे हैव एन एक्सपीरियंस येट. आपको पता लग जाता है बात करने के 5-10 मिनट्स के बाद भी आपको बहुत ईजिली यू गेट टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ. दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आती हैं. आपकी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा वक्त आता है और आप सोचते हैं कि ज़िंदगी रुक गई. कई दफ़ा ऐसे रवैये आपको सताते हैं जिनका आपके वहमो गुमान में नहीं होता कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे. दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके साथ भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स जो हैं वो हुए हैं. उनके फादर की डेथ जब वो 10 ईयर्स की थी, उनके फादर की डेथ हो गई और एक ऐसा टाइम आया उनकी लाइफ में कि उनका एक्सीडेंट हो गया. ये 2 ट्रॉमास उनकी लाइफ में आए और उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया. दोस्तों, आज वो एक सीजन्ड HR प्रोफेशनल हैं. इनका नाम है मदीहा सरवर लोधी. Madeeha is currently working as a manager learning and resourcing at 10 Pulse. आज हम मदीहा से पूछेंगे कि किस तरह से जब उन पे मुश्किलात आई उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया. आइए मिलते हैं मदीहा सर्वर से. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आइए हम मिलते हैं अपने गेस्ट से जिनका नाम है मदीहा सर्वर लोधी, जो कि काम करी हैं 10 Pearls के साथ इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजर लर्निंग एंड रिसोर्सिंग. Thank you very much, Madiha, for joining us today. You're welcome. Thank you so much for inviting me. And great. And by the way, I'm looking forward for great session with you. And I know you in the personal capacity. And I think that this session is going to be a bombastic and a wonderful session. I'm hoping same. It's my very first experience going to be, but I am expecting same. Great. I'm super excited for it. I'm also super excited. Wonderful. Great. So, Madiha, हम start करते हैं कि माशाल्लाह यू हैविंग मोर देन 8 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ HR. टेक में ज़्यादा आपने काम किया. माशाल्लाह जहाँ जहाँ आप गई वहाँ पर आपने कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़े, पर्टिकुलरली ट्रेनिंग्स में. और कल्चर की बात करें उसके ऊपर, तो बढ़िया ये जो HR में जो फील्ड में आने का जो डिसीजन था वो बाय चांस था या बाय चॉइस था? अच्छा, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम के how I get into the job and from where this idea was drive. Let's start from the story, and I always like to communicate and go things in the story because वो आपको एक पूरा background के बारे में आपको बता रहा होता है and you can easily connect with things. Like taking a start, who I am and how it started and how I get into the job. I was like while introducing myself, I was a kid of like 10 years when my father passed away. Or there I took a responsibility. I was always having this sense that I have to do something in my life. Or imagine that कि when I was 11 years old, not even 11 years old, तो हमारे neighborhood में बच्चे थे and I discussed with my mother and I requested them कि अगर वो अपने बच्चों को they start sending their kids for education and we start teaching them. So tuitions जो था 11 साल के बच्चे ने start किया कि पढ़ानी है. And I was the one who continuously kept on supporting myself, like education के जितने भी finances थे, school की fees हो गई, even in the stepping into the college, I financed myself on my own. Or back when I was in university, तो remember I can still relate it कि जब मैं university में admission लेना था तो मुझे पता था कि मैंने admission लेना है and what are the going to be the finances. So मैंने उसके लिए हर tuition में when I was in 8th class तब से मैंने savings start की. So I can buy the prospects and I can go with the admission fee and all. So I made a saving
from 8th class till my university time so that I can, take an admission in my university. Acha, after getting an admission, I was one of the position holders. Scholarship maintain करने का एक idea था. Ideally, the reason was कि I wanted to finance myself and support myself. मेरा ऑलरेडी स्कॉलरशिप मोर देन 70% था, बट फॉर द 30% आई वाज स्ट्रगलिंग अगेन. सो आई वांटेड कि मैं पोजीशन लेने के थ्रू वो मेरी भी जो सारे फ़ी थी वो वेव ऑफ हो जाए किसी तरह से. So while going through all this, I was happy. I was having 2 years happily in the university. सब अच्छा जा रहा था. I was actively participating in the university debate society and other societies, dramatic societies. So I was actively, participating. But then I was in 4th semester. So while heading towards my final exam, so I had an accident. And imagine that it was an accident where I was bedridden for a month. Or I cannot move even a single inch. My body was completely in pain and I could feel that I was so much dependent on my family कि मुझे कहीं पे भी कोई भी movement ज़रा सी भी चाहिए थी, even to have a glass of water. So I was dependent on my family. Winters में I had this accident, so the body pain is more अगर उसकी intensity ज़्यादा होती है. So while having all this experience, so I decided कि ना that finances थोड़ा से problems आ रही थी सारी चीज़ों से related. So it was a huge expense on medical. Me and my sister, we both had an accident. So then I talked to my sister and I said her कि मुझे ना I wanted to do job. And she was like कि Madiha, if you will do a job तो आप अपनी definitely you are going to leave a negative effect on your studies. आपके grades ख़राब हो जाएंगे, सारी चीज़ें you are not used to of it. अभी ठीक है, just let the things go, हो जाएंगी चीज़ें. And I decided, no, I have to do something. I mean, it's something कि मुझे लगता है कि it was a blessing for me. While staying on bed, I realized the strengths I was having and how much I can, utilize the time in the best possible way. So this is something I had a deep realization, and I requested my sister, and she put my resume in one of the IT company, and it's one of the known IT company, and she mentioned कि मतलब at least इसका interview करवा दे, job होना ना होना, it's on her choice. So from there it all started. And I went into the job. Initially that job was related to business development sort of, but I knew that over the time I enjoy interacting with the people, and there was this always habit to solve the problems, to figure out and give the solutions to the problems. So I was always into, in my personal capacity, I later on realized I was mentoring people around them. I was counseling them even in my own capacity. So that's how I went into the job, and slowly and steadily when I became a part of HR, तो HR से आगे मूव होते हुए I started my career with 2 best mentors, and I always happy to mention them. One of them is Harun Akhtar and Ibrar Ahmed. I started working with them. So a lot of guidance was there from their side, but then later on moving ahead, I realized that training was one of the core area where I wanted to transform people. होता ये कि HR में जब लोग आ रहे होते हैं, हायरिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है. हम लोगों को हायर तो करते हैं, बट व्हेन वी टेक देम टू द प्रोजेक्ट, तो I felt like there is this gap where what are the requirements, we have to train the people as per it. तो this is something required to be filled. उससे related हमने अपना एक startup भी run किया था, which was not very successful, but it gave a learning and experience. So considering that experience, and now that I wanted I would get into the training, so I got attached with another company with the name of North Bay, and I worked with them. Or it was a chance. I was lucky enough that I had a complete opportunity to avail it, and with all that, I literally have seen training in HR is very, very important and plays a vital role. You can transform people from what they were to what they are, and when they are transformed, so you feel like being so happy, and it's not for the sake of credit, but when they name it it's because of your
support and help, we realized, and you helped us to be what we are. So it's give a sense of satisfaction, at least somehow in your capacity you contributed in other person personality and you made a positive impact, and it's a kind of change, bringing change experience. So that's make me satisfied and happy from inner self. So your passion, your what you wanted, it gets related to the profession, and when it's get related to the profession, so it's just you enjoy doing work what you are doing. Great. So a bit detailed Wonderful. reply. I mean, it's a great reply, by the way. Madiha, one important question, and that is, दो major incident आपकी life में है. One is basically कि father passed away, और फिर आपका एक एक्सीडेंट हुआ. उस ट्रॉमा को किस तरह से आपने हैंडल किया और कैसे आप बाहर निकली? उस टाइम क्या जहन में चल रहा था? क्योंकि जब कोई ज़िंदगी में हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई इश्यूज आते हैं, तो हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, बड़ी जल्दी टेंशन में आ जाते हैं. तो उसको किस तरह से फेस किया आपने? इसको मैं आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं अपने कंट्रीब्यूशन से पहले आई वुड से कि मैं अपनी मदर का कंट्रीब्यूशन एंड द वैल्यूज़ विच आई गेन फ्रॉम माई इन्वायरमेंट, I would like to add all that. अच्छा, my mother, I remember कि मैं first year में थी और I had this problem of traveling in local and I could not travel. So when for the first time I was traveling in bus for heading towards my college, तो मैंने आने के बाद अपनी मामा को कहा कि I cannot do this. मेरे से ये प्रॉब्लम, आई कैन नॉट हैंडल दिस, मैं आई कैन नॉट ट्रैवल ऑन लोकल्स. सो शी मेंशन दैट कि बेटा दिस इज़ द ओनली वे जो मेरे कैपेसिटी में है एंड आई कैन फैसिलिटेट यू. सो अगर करना है तो ये मैंने रास्ता दिखा दिया है, नहीं तो बच्चे प्राइवेट भी बैठ के पढ़ते हैं, तो यू हैव टू डिसाइड. सो always in my life I felt like there are choices, there are options in front of you. You have to make the choice and you have to decide things for yourself. So moving ahead now, उनकी इस पूरे प्रोसेस में ना एक जुमला उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि बेटा गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में. And then there was another thing I read in that process कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते. These two sentences, these two lines transform me from what I was to what I am. And moving ahead, I believe कि आपकी मदर की, आपकी माँ की दुआएं एक जगह होती हैं आपके साथ, आपका कल्चर इन्वायरमेंट आपके घर में, हमारे घर में थोड़ा सा मजहबी, थोड़ा दीन और दुनिया को दोनों साथ लेके चलना बड़ा इम्पॉर्टेंट था. तो देयर वाज दिस थिंग कि आपने नमाज की पाबंदी रखनी है, आपने नमाज, रोज़ा और ज़कात और यू हैव टू गिव द चैरिटी. हमें अच्छा इन चीज़ों का पता नहीं होता, हम जब ये चीज़ें हो रही होती हैं ना, हम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता. मैं कि मूविंग अहेड जब थोड़ा थोड़ा करके टाइम गुजरता जाता है, सो वी स्टार्ट सीइंग द काइंड ऑफ चेंज एंड इम्पैक्ट दे लीव इन आवर लाइफ. और हम अपने, और उससे जो हमें पॉजिटिव एनर्जी और वो फील हो रही होती है ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है. वो आपको हर सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, हर सॉर्ट ऑफ वरीज, स्ट्रेस एंड व्हाट नॉट, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको एक स्ट्रेंथ दे रही होती है. तो मेरा ख़्याल है कि मेरे जितने भी फेजेस गुज़रे, और अगर उसमें बहुत इजी था कि आई कुड हैव गिव अप, बट आई न्यू दैट समहाउ दिस शैल टू बी पास, मतलब ये भी वक्त गुजर जाएगा. और उस वक्त गुजरने के लिए अपनी ज़ात के अंदर कंसिस्टेंसी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट थी. सो मेरा ख़्याल है कि मूविंग अहेड मुझे जिसने सबसे ज़्यादा एक सपोर्ट, एक स्ट्रेंथ दे रखी, वो ये सारी चीज़ें थी जो आपकी वैल्यूज़ थी, आपकी नमाज, रोज़ा, आप अपने आप को, एंड देयर इज़ दिस विलिंगनेस एज वेल. आई बिलीव कि आप कुछ भी चीज़ वैसे नहीं कर सकते जब तक आपकी खुद विल ना हो. तो दिस विलिंगनेस जो थी ना, टू ब्रिंग द चेंज इन माई सेल्फ एज वेल इन द सराउंडिंग्स, led me to where I am. Madiha, what an inspirational story. I mean, you're amazing and super. By the way, I am motivated after listening your story. So, Madiha, एक incident जो आप बता रही थी कि father वाला जो था, बड़ा मुश्किल होता है. लोग जो हैं वो आपका साथ नहीं देते. अक्सर जो पास होते हैं साथ नहीं होते. तो वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट फेस है. जब आपने ट्यूशन पढ़ाई तो ये वो वुड यू लाइक टू टेल अस कि जो इर्द गिर्द के लोग थे, क्या उनके रवैये चेंज हो चुके हुए थे और आपने खुद डिसीजन लिया कि बाहर ट्यूशन पढ़ाऊंगी, आगे बढ़ूंगी? दैट्स अ हार्ट फेल्ट थिंग जो आपने मेरे से पूछा. मैं आपको बताती हूँ. इसमें ये हुआ कि आई वॉज बॉर्न in Dubai. I wasn't born in Pakistan. I lived there.
सो यू नो कि आप जब बाहर रह रहे होते हैं तो आपका एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, एक डिफरेंट कल्चर, और लोगों को एक एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. So it was how my father passed away was at the time कि we were visiting Pakistan for the first time and he had an heart failure and it was such a sudden death कि मैंने अपनी life में कोई भी funeral एक experience करता है ना बच्चा, it was for the first time I experienced his funeral. Imagine that कि जब हम पाकिस्तान आए and we have seen and experienced कि लोग हम लोगों को invite कर रहे थे दावत पर. We were invited on many lunch, dinners and everything. We were in the limelight and everyone wanted to meet us because we were visiting for the first time Pakistan. My mother used to travel, my parents used to travel, but we were having we did not ever get a chance to travel. Chance भी था, but ये था कि थोड़ा सा पाकिस्तान से related एक image बहुत अजीब सा था, तो वो आना नहीं हुआ. तो हम फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और इमेजिन दैट कि आपके वालिद साहब जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप रात को बैठ के हर रात को आप बैठ के उनसे कहानी सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं, और उनका इंतकाल हो जाए. और आप मतलब इट वॉज वेरी अनसर्टन कि आप फ्यूनरल तक एक बच्चा को अपने फर्स्ट टाइम देख रहा है. माई यंगर सिस्टर, शी वॉज हार्डली 5-6 years old एंड शी डिड नॉट न्यू एंड शी वॉज प्लेइंग एंड शी सेड बाबा जान तो सो रहे हैं. तो वो फिर after my father death after some certain time मैंने देखा कि लोगों के रवैये कैसे बदलते हैं और लोग कैसे चेंज होते हैं. Probably they thought कि we are going to be dependent. Probably they thought कि a lot of challenges are going to be with us. So people changed, but एक चीज़ बहुत consistent थी, वो अल्लाह ताला का साथ था. My mother, she was always कि अल्लाह का ला इंतहा शुक्र है बेटा. और मुझे लगता था कि अल्लाह का ला इंतहा शुक्र कैसे कर रही हैं कि हम लोग इतनी everything is changed और nothing is like that how it used to be. बट उनका जो अल्लाह का शुक्र था ना ला इंतहा वाला, एक शुक्र की भी हद नहीं थी उनकी. मुझे लगता है कि उसने मुझे हमेशा स्ट्रेंथ दी कि कुछ नहीं होता, चीज़ें गुजरेंगी, बदलेगा, सब टाइम होगा. So yeah, I very closely experienced how people change. और जब चेंज के साथ साथ ना जब आपका बुरा वक्त होता है ना तो सब आपका साथ छोड़ने के लिए पहले होते हैं, मगर जब आपका वक्त बदलता है फिर से तो आप यकीन करें कि बहुत से लोग, बहुत से चेहरे फिर से वापस आ जाते हैं और वो फिर से आपके साथ बढ़ के आपको वही चाहत मोहब्बत दे रहे होते हैं. और फिर आप अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अब आपका वक्त है, अब आपने you have to let go the things and you have to leave a good impression. You don't have to revise and go back and repeat the same history. So that's Agreed. how it is. And wonderful. I got senti by the way, and I mean it's a real fact कि जब ऐसा कुछ होता है तो जो है रवैये बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं. एग्रीड, ऐसा होता है. लेकिन जब आप कामयाब हो जाए ना मदिहा, तो फिर वही लोग आपकी मिसालें देना शुरू कर देते हैं. और आई एम श्योर अबाउट दैट एंड योर फादर मस्ट बी प्राउड, फीलिंग प्राउड ऑन यू कि ये आसान नहीं था सफ़र. इट्स वेरी चैलेंजिंग बट फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. और अल्लाह ताला ने करम किया. और वो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि आपकी जो वालिदा का जो एक बिलीव और यकीन था कि यस अल्लाह पाक इज़ द बेस्ट प्लानर, सब चीज़ें चेंज होंगी. एंड बाय द वे वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ यू आर वेल रिनाउंड. अल्लाह ताला के फजल करम से टेक की HR फ्रेटर्निटी में बहुत कंट्रीब्यूशन है. तो बिल्कुल, एंड वी आर गोइंग टू रैप अप आवर सेशन. फ्यू क्वेश्चन आई लाइक टू आस्क. द वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज एंड दैट इज़ कि आप काफ़ी देर से हैं टेक में, आप इंटरव्यूज़ भी करती हैं. सो आप क्या 3-4 स्किल्स देखती हैं किसी भी कैंडिडेट को हायर करने में? अच्छा, कैंडिडेट को हायरिंग का प्रोसेस जो होता है ना उसमें देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच गेट इन्वॉल्व. आपकी टेक साइड पे जो आपकी टेक्निकल साइड की रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है, आई कैन नॉट गो इन द टेक्निकल इवैल्यूएशन. लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड, अबाउट द पर्सनालिटी इवैल्यूएशन. टॉकिंग अबाउट द कल्चरली फिट, एटीट्यूड या पर्सनालिटी का. हाँ, जो पर्सनालिटी में आता है ना, सो एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी कल्चरली फिट और अडेप्टेबिलिटी कितनी है, अपने आप को चीज़ों में एडजस्टमेंट कितनी जल्दी पॉसिबिलिटी है, एंड द पर्सन इज़ हार्ड वर्किंग और नॉट. मैंने देखा है कि जो बहुत एक्सपर्ट और बहुत वो हाई लर्नर्स जो होते हैं, दे आर एट टाइम्स बिकम कल्चरली मिसफिट, क्योंकि वो उनमें इतनी चीज़ होती है कि दे डोंट गेट
it's not all the time, not every case is the same case, but there are times कि जब आपके ये होता है. So I usually encourage or try to have people who are very much hardworking, who have aim goals and who have gone through with some struggle and they know they have some targeted and goal to achieve that. And apart from that, when I talk about कि cultural fit और वो सारी चीज़ें हैं, so there is this another area which is part of like soft skills आपकी आती हैं. Soft skills में I would highly try to add the value things which are important, जिसमें आपकी आ जाती है communication, leadership, people management, a team good player, how much that person is. So ये चीज़ें आती हैं. अच्छा, कुछ होते हैं कि जैसे fresh grads होते हैं तो हम उस केस में ये नहीं कह सकते because they haven't experienced yet, but how much they have this urge, this thing to learn and adapt the new things. आपको पता लग जाता है बात करने के 5-10 minutes के बाद भी आपको बहुत easily you get to know about the personality. और so these are the important things which I would say I do highly consider. Wonderful, Madeeha, wonderful. Any final wording about Qasim Ali Shah Foundation? Qasim Ali Shah Foundation is doing a tremendous work. They are changing the lives of people, and I must say कि Qasim Ali Shah का क्योंकि I listen a lot of TED talks, I listen a lot of power talks, so Qasim Ali Shah की भी मैंने काफ़ी talks सुनी हुई हैं. And one thing कि उनकी जो communication skills से related, soft skills, personality grooming, how to handle stress, depression and other जो उनकी videos हैं, so they have contributed a lot in my growth as well, I must say. So they are doing the tremendous work, and it's feeling an honor that today I am here and I'm experiencing the same energy and overall. So that's an amazing work they are doing. We also, we are honored too that you are with us, and thank you very much for your time and support. You're welcome, and again it's an honor for me to be here. Great, wonderful. Thank you very much. आप सबका भी आज की एपिसोड देखने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो एपिसोड थी उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा. मदीहा हमारे साथ थी, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कभी कोई मुश्किल आए उसका आपने मुकाबला करना है, किस तरह से जब अपनों के रवैये बदल जाते हैं और आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं है, उसको आपने फिर से कैसे शुरू करना है, ये आज मदीहा ने हमें बताया. थैंक यू वेरी मच. आपका अगेन इस एपिसोड को देखने का, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करते रहें ताकि हम इम्प्रूव करते रहें. जज़ाकल्लाह.